الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ دوست اور بھائیوں، اللہ جل شان و من والوں کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کے دن، جس دن میں ایک خاص وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، اس دن اور عصر کے بعد اس وقت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس فکر کے لیے جمع فرمایا ہے کہ جو فکر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی، اور جس فکر کے لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کو اتنا فکر اور غم تھا کہ میری امت، میرے کلمہ پڑھنے والے ایک بھی جہنم میں نہ جائیں، سب جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس فکر کے ساتھ ہم آج یہاں جمع ہیں، اور جمعہ کا دن بھی ہے، قبولیت کی گھڑی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan selepas membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini satu kesyukuran yang besar yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di hari yang penuh berkah, di mana selepas asar ini adalah waktu yang dikatakan bahwa di dalamnya ada waktu yang setiap doanya orang Islam ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dikumpulkan dalam satu majelis yang besar. Tidak hanya duduk saja, tetapi kita duduk di sini ada satu fikir yang besar. Kita duduk membawa fikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, bagaimana setiap satu orang dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terselamat dari api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah fikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa fikir ini. Dan kita duduk pada hari Jumat selepas asar, di mana waktu yang penuh qabuliyat, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, senantiasa memberikan kita taufik untuk menghargai waktu yang berharga selepas asar di waktu Jumat ya. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کیا کرو کہ اللہ تو مجھے قبول فرما لے۔ جس دن وہ قبول فرما لیں گے اس دن ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ جس کو پسند کرے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش تھے، بہت خوش تھے۔ پوچھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بلال کیا بات ہے؟ فرمایا، یا نبی اللہ، میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ اگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ تو اپنوں کو ہدایت دے دیتے، ہمیں جیسے کالوں کو کون پوچھتا؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے ہدایت فرما دی اور آپ کا غلام بنا دیا، آپ کے دربار کا مؤذن بنایا۔ میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں۔ تو بزرگ اور بھائیوں، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی اللہ کے یہاں کہ اللہ تم مسلمان گھر میں پیدا کر دے۔ جی
ये तो इतनी बड़ी चीज है कि अब नबियों ने तमन्ना की, या अल्लाह अगर इस उम्मत का तो हमें नबी नहीं बनाता तो हमें एक उम्मती ही बना दे। कितनी बड़ी चीज है। जब इसके फजाइल सारी आसमानी किताबों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने भी आए तो उन्होंने दरख्वास्त की, या अल्लाह अगर ये उम्मत मुझे नहीं देता, अल्लाह ताला ने फरमाया इस उम्मत के लिए तो हम अपना नबी छांट चुके हैं, हाँ हम तय कर चुके हैं। तो कहा या अल्लाह तू मुझे एक उम्मत ही बना दे। क्यों? कि बाज़ नबी मेहनत करके अल्लाह के दीन की, अल्लाह के जितनी मेहनत के वास्ते अल्लाह उनको भेजा, जितना इलाका उनको दिया, वो जन्नत में जा रहे होंगे चंद 100 को लेकर, जी हजारों को लेकर, लाखों को लेकर। लेकिन बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे होंगे वो अकेले ही जा रहे होंगे, और ये जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, वो नबियों वाली मेहनत दी गई है कि ये करोड़ों को, मुल्कों को लेकर जन्नत में जा रहा होगा। तो कहा जाएगा ये कौन सा नबी की उम्मत है, ये कौन है? कहा जाएगा ये कोई नबी नहीं है, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती है जिसने वो मेहनत की है और अल्लाह ने उसकी मेहनत को कबूल किया है, आके लाखों करोड़ों को लेकर ये जन्नत में जा रहा है। Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang seperti ini, waktu yang penuh keberkahan, waktu yang penuh qabuliat, di mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa sama-sama di dalam hati kita sambil duduk-duduk seperti ini, supaya kita ini diterima dalam kerja agama ini. Kita tidak tahu Bapak-bapak sekalian, siapa yang akan diterima korbannya oleh Allah, siapa yang akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, beliau katakan bahwa satu ketika Hadrat Bilal radhiyallahu anhu pernah tersenyum gembira. Begitu gembiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Bilal, kenapa engkau begitu senang? Kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau gembira?" Maka Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, saya senang karena memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya hidayah. Allah telah pilih saya sebagai orang yang mendapatkan hidayah. Allah pilih saya sebagai muazzin Masjid Nabawi. Saya senang karena Allah Subhanahu wa taala telah pilih saya. Kalau seandainya ya Rasulullah hidayah itu di tanganmu, maka mungkin saja saya ini sebagai seorang hamba saya tidak akan mendapat hidayah, tetapi orang-orang yang engkau pilih saja, orang-orang yang engkau sukai, keluargamu saja yang akan mendapat hidayah. Tetapi ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah pilih saya." Maka hadirin yang dirahmati Allah, begitu pula kita ini. Kita dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah meminta. Sejak lahir, sejak di kandungan ibu kita tidak pernah meminta kepada Allah supaya dijadikan umat ini. Sedangkan hadirin, sebagaimana kita ketahui, nabi-nabi terdahulu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan sebagai umat ini. Sebagai umat, minta ya Allah, berikan umat ini menjadi umatku. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu minta sebagai umatnya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntungnya kita ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah meminta kita telah diangkat, kita telah dipilih menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin? Karena nanti di hari kiamat akan ada beberapa nabi yang membawa umatnya, 1 orang, 2 orang, puluhan, ribuan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan datang bergerombol seseorang yang bukan nabi membawa begitu banyak orang masuk ke dalam surga bersama mereka. Bukan ribuan, bahkan jutaan, bahkan per negara hadirin dibawa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, siapa ini?
Siapa yang membawa ini? Bukan seorang nabi, tetapi membawa jutaan orang masuk ke dalam surga. Maka hadirin dijawab, ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diterima dalam kerja agama. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diterima oleh Allah dalam kerja dakwah. Amin. तो मोहतरम और भाइयों, मुश्किल ये है, हमने ऐसे माहौल में आंखें खोली हैं, हम आज दुनिया के चक्कर में और दुनिया कमाने के चक्कर में और दुनिया कैसे कमाई जाती है, इसके चक्कर में आज हम आ गए और हम ये भूल गए हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा मकाम क्या है। यूं कहा, जो अपना नाम भूल जाती है, जो अपना काम भूल जाती है और जो अपना मकाम भूल जाती है, उसका क्या हाल होगा? उसका तो यही हाल होगा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जिस तरह ये उम्मत कट रही है और जिस तरह ये उम्मत की जो है वो जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ रही है, ये सब हमने, ये खुद हमारी खता है कि हमने ऐसी दुनिया के मेहनत में लगे और ऐसे को पीछे लगे जिनको खुद अपने नाम का पता नहीं, अपने काम का पता नहीं, अपने मकाम का पता नहीं, जो ना अल्लाह को जानते, ना अल्लाह के रसूल को जानते और हमें आखिरत में जाना है या उसका यकीन है, उनके बीच चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। हम ऐसे लोगों के बीच चल रहे हैं कि जिनको कुरान इंसान भी कहने को तैयार नहीं है। Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang begitu sulitnya ini, hari ini kita ini hidup di dunia ini, dan kita banyak tertipu oleh dunia. Begitu sibuknya kita dengan urusan dunia, siang malam kita banting tulang cari dunia, sibuk dengan toko kita, sibuk dengan perdagangan kita, sibuk dengan urusan kita masing-masing, sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah lupakan derajat kita, derajat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, makom kita dan nama kita sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita telah lupakan. Hadirin, kita tidak tahu siapa kita ini, tugas kita apa. Hadirin, kemudian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya apa apabila kita buat kerja ini. Hari ini begitu sibuknya kita dengan dunia ini, dengan kerja dunia kita, sehingga hadirin yang dirahmati Allah, 3 perkara ini telah kita lupakan. Siapa kita, siapa nama kita, kemudian apa kerja kita dan apa derajat kita hadirin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana satu orang yang sudah tidak tahu lagi derajatnya di sisi Allah, tidak tahu siapa namanya hadirin, dan tidak tahu apa kerjanya, maka hadirin, inilah kita bisa lihat keadaan kita sekarang sebagaimana layang-layang putus, tidak tahu arah kemana. Kita ini sudah dalam keadaan hina. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dunia, kita terlalu sibuk dengan urusan kita, sehingga kita lupa siapa kita ini, apa makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apa derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, beliau katakan bagaimana kita ini mendatangi umat yang hari ini sudah tidak tahu, tidak mengenal lagi siapa itu Allah, tidak mengenal lagi apa itu Islam. Bagaimana kita datang kepada mereka hadirin. जिसको अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक का पता ना हो, जिसको अपने अल्लाह का पता ना हो, वो तो ऐसा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, और चाहे वो बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, और चाहे वो दुनिया का बहुत बड़ा मालिक हो, और कितना भी दुनिया के अंदर वो कमाता हो और पूरी दुनिया उसको अपना लीडर मानती हो। फरमाया जिसको अपने पैदा करने वाले का पता नहीं, खालिक और मालिक का पता नहीं, उसके बारे में तो कुरान उसको इंसान कहने को तैयार नहीं है। हम ऐसों के पीछे चल रहे हैं। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengenal siapa Khaliknya, penciptanya, siapa Maliknya, orang yang sudah tidak kenal lagi siapa Tuhannya hadirin, maka bagaimana keadaannya hadirin? Inilah keadaan umat hari ini. Sudah melupakan siapa Allah Subhanahu wa taala, sudah melupakan Khalik,
sudah melupakan penciptanya, sudah melupakan siapa yang menguasai dia hadirin. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah datang kehinaan kepada dia. Dan ajibnya hadirin dan anehnya kata beliau, hari ini kita telah mengikuti orang-orang seperti ini. Dikatakan sehebat-hebatnya orang menghasilkan uang, menghasilkan harta, menghasilkan dunia, menghasilkan sarjana yang tinggi, pangkat yang tinggi hadirin, kehormatan dari segi dunia dia hasilkan, tetapi dia tidak bisa mengenal siapa itu Allah, maka orang ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama nilainya dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, orang yang dipandang terhormat di pandangan manusia tapi tidak mengenal Allah, Allah katakan sebagaimana hewan. Dan ajibnya kata beliau, hari ini kita mengikuti orang-orang seperti ini. जिसको अपने पैदा करने वाले का पता ना हो, अपने खालिक और मालिक का पता ना हो, चाहे वो दुनिया में कितना उड़ा फिरता हो, उसके बारे में कुरान तो उसको इंसान भी कहने को तैयार नहीं है. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, siapa penciptanya, siapa yang telah memberikan segala-galanya buat dia. Kata beliau hadirin, Al-Quran tidak siap untuk mengatakan orang yang melupakan Allah ini sebagai manusia hadirin. Tidak dikatakan sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. कुरान ने कहा है ऐसों के बारे में, उलाइका कल नाम, ये तो चौपाए हैं, ये तो ढोर हैं, ये तो जानवर हैं. Orang yang seperti ini dikatakan ulaika kal an'am, mereka ini bukan manusia. Katanya mereka ini adalah binatang, sama seperti sapi, sama seperti binatang-binatang lainnya, walaupun mereka bentuknya manusia, tapi pada hakikatnya mereka ini binatang. और सिर्फ ये नहीं कहा कि ये जानवर हैं, चौपाए हैं, ढोर हैं, नहीं, इससे भी आगे और बात कही है कुरान ने. वो क्या है? बल हम अवल, उससे भी गए गुजरे हैं. Bukan hanya dikatakan sebagai binatang hadir, binatang melata, sapi atau hewan-hewan lain, tidak dikatakan itu. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, apa Allah katakan? Penghinaan yang sehina-hinanya. Balhum awal, bahkan mereka ini lebih hina daripada binatang. क्यों कहा? इसको सोचो, इसको सुनो. इसकी मिसाल दी गई है. एक जानवर को अपने खेत से खिला पिलाकर उसकी रस्सी को उसकी कमर पे डाल देता है, खेत वाला उसको इशारा करता है, चल भाई घर की तरफ. अब वो चला जा रहा है. रास्ते में कोठी, बंगले, महल, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मकान, मगर कहाँ जाके रुकेगा वो? अपने मालिक के घर, चाहे वो कच्चा मकान है. अरे वो जानवर होकर अपने मालिक को, उसके घर को पहचानता है. और तू इंसान हो, तू इतना बड़ा डॉक्टर होकर, इतना बड़ा प्रोफेसर होकर, इतनी टेक्नोलॉजी जानने वाला, इतना ऐसा अपने को मिनिस्टर कहलाने वाला, और तू अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचानता. तो कुरान ने ऐसे को तो कहा है कि जानवर ही नहीं, उससे भी गए गुजरे हैं. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau kenapa seperti ini? Dengarkan baik-baik hadirin. Kata beliau, kita bisa memberikan misal. Dari permisalan kita bisa paham bahwa manusia yang lupa kepada Allah itu lebih buruk lagi dari binatang. Seekor sapi hadirin yang dirahmati Allah, hewan ternak, kalau diberi makan sama tuannya, diberi makan, diberi minum, dipelihara, maka pada saat sudah selesai kerja ini kerbau dibawa dari mana sawahnya menuju ke kandang, maka sapi ini akan berjalan terus, akan mengikuti kata-kata tuannya yang telah memberi makan dia, yang telah memberi minum dia, yang telah memberikan tempat kepada dia, telah memelihara dia. Walaupun selama dia melewati, dia akan berjalan menuju kandangnya, dia melihat rumah-rumah yang indah, melihat real estate, dia tidak akan masuki tempat itu, karena bukan itu yang diperintahkan oleh tuannya. Dia diperintahkan untuk masuk ke kandang yang kecil. Dia tidak akan perhatikan hadirin rumah-rumah besar, tapi dia akan perhatikan apa yang disuruh oleh tuannya hadirin. Ini manusia hadirin kamu katanya. Seorang dokter yang besar, profesor, orang katakan kamu orang yang berakal, seorang menteri, hari ini dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala
tetapi tidak mau masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah, maka apa kalau bukan kamu ini lebih buruk daripada hewan? मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और भाइयों, अब हमें ये सोचना है हमें किसके पीछे चलना है, जिसको अपने अल्लाह का पता नहीं, अपने रसूल का पता नहीं, अपने दीन का पता नहीं, तो हम उनके पीछे चले। हमें तो कुरान जिसको कह रहा है हम तो उसके पीछे चलेंगे। क्या फरमाया है? अदू इल्लल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी कुल हाज़िही सबीली अदू इल्लल्लाह। ये कुरान क्या कह रहा है? किसके पीछे चलना है जी? अरे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हमने भेजा, जिसको 99 हिस्से अकल के दिए, कितने? 99% हिस्से अकल के अल्लाह ने अपने नबी को दिए और एक हिस्सा दुनिया में भेजा। अब बताओ इन आजकल की टेक्नोलॉजी जानने वालों को जी, जितना अल्लाह ने खोल दिया उसको कहते हैं साहब हमने इतनी तरक्की कर ली। हालांकि तरक्की तो यह है कि अल्लाह को पहचाने, उसके रसूल को जाने, उसके दीन को जाने, तरक्की तो यह है। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lihat hari ini kita sedang berjalan di belakangnya siapa hadirin. Walaupun dia seorang profesor, dia seorang yang pintar, dia menghasilkan jabatan yang tinggi, tapi orang seperti ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di belakangnya, maka hadirin yang dirahmati Allah, kita dalam keadaan celaka yang sebesar-besarnya. Kita ini harus berjalan di belakang siapa, kata beliau. Quran sendiri yang telah mengatakan kita harus berjalan di belakangnya siapa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Ini yang harus kita ikuti hadirin. Jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang yang telah dikatakan sukses, orang yang akalnya hadirin yang dirahmati Allah, kalau dibandingkan dengan seluruh orang-orang yang ada di dunia ini yang mengatakan dirinya pandai, kalau dibandingkan dengan akalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada apa-apanya hadirin. 99 akal, 100 akal hadirin. 100 akal Allah ciptakan, 1 akal telah diturunkan ke dunia ini, dibagikan semua orang-orang pandai di dunia, dan 99 akal diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang seperti inilah kita harus ikuti hadirin. Hari ini hadirin yang dirahmati Allah, bukan namanya kemajuan bisa menghasilkan gedung-gedung tinggi, menghasilkan uang yang banyak, bisa menghasilkan teknologi yang hebat-hebat. Bukan ini yang dikatakan kemajuan di hadapan Allah. Yang dinamakan kemajuan adalah dia paham apa kerjanya, apa itu agamanya hadirin, dan kepada siapa dia berjalan. Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dikatakan kemajuan, maka inilah yang dikatakan sebagai kemajuan pada hakikatnya. मोहतरम दोस्तों और भाइयों, दुनिया के तमाम इंसान अंधे हैं जी। जन्नत के एतबार से अंधे, जहन्नम के एतबार से अंधे। अल्लाह ताला नमाज पे क्या देते हैं इसके बारे में सारे दुनिया के इंसान अंधे हैं। अल्लाह की याद पे क्या मिलता है इसके बारे में सारे दुनिया के इंसान अंधे हैं। किसी बेवा यतीम पर रहम खाने से अल्लाह क्या देता है जी, इसके बारे में सारे दुनिया के इंसान अंधे हैं जी। तो इन अंधों के पीछे चलोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर कहां चले? एक ही आंख वाले हैं, वो क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक आंख वाले हैं जो देखकर आए, जिनको अल्लाह ने बुलाया अपने पास और अपने सारा निजाम दिखाया, सारा गैबी निजाम दिखाया, जन्नत उनको दिखाई, दोज़ख उनको दिखाई, और किस अमल पे अल्लाह क्या देता है ये दिखाया। अगर किसी इबादत करने वाली औरत ने बिल्ली बांध रखी थी और उसने बिल्ली को भूखा मार दिया, अपनी इबादत करती रही, अल्लाह ने दिखाया, प्यारे नबी जी देख लो, यह है सजा कि वो औरत जहन्नम में है। और अगर किसी फाहिशा औरत ने अपने गुनाहों के बावजूद एक कुत्ते पर रहम खाया और उसको पानी पिला दिया,
इस पर अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। प्यारे नबी जी ये भी देख लो, इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए हैं तो आपने देखा कि ऊपर से नीचे कुछ जा रही है और नीचे से ऊपर कुछ जा रही है। आपने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने फरमाया ये आपकी उम्मत के आमाल आ रहे हैं, ऊपर से फैसले उतर रहे हैं। Maka hadirin yang dirahmati Allah, beliau katakan bahwa seluruh orang di dunia ini adalah buta semua. Pada hakikatnya buta. Apa yang ada di dalam neraka, seluruh dunia buta. Apa yang ada di surga, semuanya buta hadir. Apa yang didapatkan pada saat kita berzikir, apa yang kita dapatkan pada saat kita memelihara yatim atau seorang wanita lemah yang janda hadirin. Apa yang didapatkan ini semua orang buta hadirin, tidak bisa melihat. Apa yang didapatkan pada saat orang sholat, semua ini hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa melihat hadirin. Hanya satu orang saja yang melihat di dunia ini. Siapa itu hadirin yang bisa melihat? Yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita berjalan di belakangnya orang buta hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana orang buta tidak tahu kemana arahnya, kita pun akan tersesat sejauh-jauhnya. Maka kita mengikuti kepada orang yang melihat hadirin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat segalanya. Ketika Isra Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dekat hadirin, kemudian diperlihatkan segala-galanya oleh Allah. Apa yang didapatkan oleh orang-orang di dalam nerakanya Allah, apa yang didapatkan orang yang di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang didapatkan pada saat beribadah, apa yang didapatkan oleh seorang wanita yang kata beliau, seorang wanita yang sibuk dengan ibadah. Kemudian seekor kucingnya dimasukkan di dalam kamar, kemudian tidak diberi makan. Sibuk dia dengan ibadahnya, maka kucing tersebut mati karena kelaparan. Apa yang didapatkan adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, ini lihat orang yang tidak memperhatikan makhluk Allah masuk ke dalam neraka. Begitu juga seorang wanita penzina hadir, diperlihatkan oleh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang wanita penzina yang memberikan makan, memberikan minuman kepada anjing yang haus. Karena memberikan minum itu, maka wanita penzina itu telah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga. Ini diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diperlihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, baginda melihat hadirin bagaimana ada satu cahaya yang naik ke atas bumi, dari bumi ke langit, kemudian turun kembali. Maka baginda Rasulullah bertanya, apa itu wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam berkata bahwa itu amalan umatmu. Sebagaimana umatmu beramal, maka akan naik ke atas langit, dan dari langit akan turun faisalah, keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua telah diperlihatkan oleh Allah. Maka kalau mengikuti, maka kita harus mengikuti orang yang melihat. Maka yang melihat hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जिस नबी को अल्लाह ताला ने तमाम इनामात के खजाने दिखा दिए हों, और जिस नबी को अल्लाह ताला ने तमाम सजाओं के खजाने दिखा दिए हों, उस नबी को अल्लाह ताला ने अब भेजा। जाओ मेरे नबी जी, जाओ मेरे प्यारे नबी जी, जाइए अब आप लोगों को जहन्नम से डराइए, जन्नत की तरफ बुलाइए। आप नज़ीर भी हैं और आप बशीर भी हैं जी। जैसे हमारे यहाँ होती है ना रेड लाइट और ग्रीन लाइट, तो आप उन गुनहगारों के लिए कि जिनको आदत पड़ गई अल्लाह के अहकामात तोड़ने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ने की, नमाज़ें छोड़ने की बजाय अल्लाह उसके रसूल के भेजे हुए लाए हुए इल्म के पीछे चलने के, दुनिया के अंधों के पीछे चल रहे हैं, उनकी डिग्रियों को हासिल करके अपने को इल्म वाला समझ रहे हैं। हालांकि ये इल्म नहीं है, ये तो फन है। अरे वो हाथ में आ जाने के बाद भी डिग्री और मारे फिरेंगे, कहीं इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ, जॉब मिली नहीं मिली। तो मोहतरम दोस्तों और भाइयों, इस दुनिया के अंदर भी
अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आंख वाले हैं उनके पीछे चलेंगे, अल्लाह ताला वो दौलत देगा कि जो तो दौलत दुनिया की दौलत वालों को नहीं मिली. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diperlihatkan khazanah Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan didapatkan oleh hamba-hambamu yang taat. Ini yang akan didapatkan balasan bagi hamba-hambamu yang tidak taat. Semuanya ini telah diperlihatkan khazanah Allah Subhanahu wa taala di depan matanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengikuti baginda Rasulullah. Hanya beliaulah yang melihat, hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan wahai baginda Rasulullah, wahai Muhammad, datanglah kepada umat, berikan kabar gembira dan berikan juga peringatan kepada umat. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai nadhir, memberi peringatan, dan juga sebagai basyir, memberi kegembiraan bagi umatnya. Maka hadirin yang dirahmati, sebagaimana kita lihat lampu lalu lintas, hadirin, ada warna merah peringatan, ada warna hijau. Maka orang yang tidak mau ikut, maka hadirin yang dirahmati Allah, nanti lama-lama dia akan mengalami kecelakaan. Sebagaimana itu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya, memberikan kabar gembira juga kepada umatnya, hadirin yang dirahmati Allah. Maka kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, hadirin, kita harus lihat diri kita ini, siapa yang kita ikuti. Orang yang hari ini, hadirin, sibuk dengan yang merasa bahwa mereka ini adalah ahli ilmu, sudah menghasilkan kesarjanaan yang tinggi-tinggi, pangkat derajat yang tinggi-tinggi. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas mereka menghasilkan kesarjanaannya mereka, selepas lulus mereka belum tentu dapat kerja. Mereka sibuk cari uang, hadirin. Masih juga sibuk dengan bagaimana kehidupannya besok. Ataupun sudah dapat, hadirin, kerjaan, sudah dapat pangkat yang tinggi, tapi itu tuh tetap masih susah hidupnya, hadirin. Kenapa, hadirin yang dirahmati Allah, kita masih ikut mereka? Yang harus kita ikuti adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi वसल्लम. तो जो नबी अल्लाह ताला के तमाम निज़ाम को देखकर आया हो, उसको यहाँ दुनिया में कैसे चैन मिलेगी? वो कैसे चैन से सो जाएगा? वो कैसे पेट भरकर खाना खाएगा? वो तो मोहतरम दोस्तों, भाइयों, आपको जिस फिक्र के लिए भेजा गया था, और जब आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया और आप तशरीफ लाए, तो आपने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला से कहा, अपनी प्यारी बीवी से, कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी बना दिया है जी, और ज़म्मिलूनी, मुझे फरिश्ते ने इस तरह से दबाया और इस तरह जो है आपके अंदर नूर भरा और अपना काम दे दिया, तो मेरी जान चली जाएगी, मुझे कुछ उड़ा दो। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको फरमाया, प्यारे नबी जी, आपको अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, आप तो बेवाओं के, यतीमों के, आप तो लोगों की अमानत रखते हो, आप तो बेवा यतीमों के काम आते हो, अल्लाह आपसे बहुत बड़ा काम लेगा। और तसल्ली देने वाले सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। उन्होंने तसल्ली इतनी दी कि घर में ऐसी होनी चाहिए तसल्ली वाली। जी दोस्तों, भाइयों, कि नबी के फिक्र को अपना फिक्र बनाया, और ये कलमा जब से पढ़ा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, ये अपना सारा जान माल आपके कलमे के फैलाने पे लगा दिया। और जब दुनिया से जा रही थी, उसमें कपड़े मैले थे और घर में बच्चियां थी, और सबसे छोटी बच्ची फातिमा रज़ियल्लाहु ताला थी, लेकिन आपने सब कुछ लगा दिया उस फिक्र के लिए जिस फिक्र को जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर अल्लाह ने भेजा था। Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selepas melihat segalanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan didapatkan oleh umatnya, maka Nabi yang begitu kasih sayangnya ini, yang memiliki cinta kasih kepada umatnya, Nabi yang begitu cinta kepada umatnya, bagaimana bisa tidur, hadirin? Bagaimana bisa tenang dalam kehidupannya kalau sudah melihat keadaan umatnya, hadirin yang dirahmati Allah?
Maka itulah yang membuat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa risau ke atas umatnya. Dikatakan pertama kali ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu hadirin, maka begitu takutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya yang begitu terang. Wahyu pertama datang, maka baginda Rasulullah kedinginan, maka langsung pulang ke rumahnya. Maka sampai di rumah menunggu istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rasa ketenangan kepada baginda Rasulullah, memberikan semangat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai suamiku, engkau ini adalah orang yang begitu penyayang. Allah akan menjaga engkau, tidak akan menyia-nyiakan engkau. Engkau ini adalah orang yang menyambung silaturahmi. Engkau adalah yang senantiasa membantu anak-anak yatim dan janda-janda. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan engkau. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah fikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam dikatakan bagaimana seluruh hartanya dikeluarkan, dikorbankan untuk agama ini. Baginda Rasulullah untuk dakwah ini, kalau pagi hari keluar dengan pakaian putih, maka balik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang paling tua, anak perempuannya akan menunggu baginda Rasulullah dilepaskan tadi pagi dalam keadaan pakaian yang putih. Maka balik-balik hadirin yang dirahmati Allah, pakaiannya penuh kotoran dan debu. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikir yang seperti ini hadirin yang ingin kita datangkan di dalam hati kita, dalam fikir kita. Bagaimana fikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi fikir kita. आप दावत दे रहे हैं और आपको पूरा दिन हो गया, दोपहर हो गई और घर वालों को फिक्र है कि आप कहाँ हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक प्याले में पानी कुछ खजूर लेकर तलाश करने चली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने अब्बा को। तो देखा कि एक जगह आपकी हालत ये हुई है, आप पे कूड़ा डाल रखा है, आप पे कपड़े फटे हुए हैं, लोगों ने क्या क्या आपको परेशान किया हुआ है। तो रोने लगी। आपने फरमाया, बेटी रो मत, तेरे बाप का ये कलमा अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया है। तेरे बाप का ये कलमा अल्लाह ताला दुनिया के हर कच्चे और पक्के घर में पहुंचा के रहेगा। Maka hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan dakwah ini berjalan keluar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, keluarganya ini akan menunggu dengan risau. Apakah ayah saya ini, apakah suami saya ini akan kembali dengan sehat, akan kembali dengan baik-baik saja. Maka hadirin, anaknya ini membawakan saat biasanya siang dan siang hari, pagi hari baginda Rasulullah SAW dakwah, maka sampai siang hadirin. Dan di siang hari, dari pagi sampai siang, orang-orang ini tidak ada yang mendengar baginda Rasulullah. Bahkan melempari baginda Rasulullah, mencaci baginda Rasulullah SAW. Maka dalam keadaan pakaian yang kotor, anak perempuan baginda Rasulullah membawakan air, sedikit air dari mangkuk, kemudian membawakan handuk dan sedikit kurma. Dalam keadaan seperti itu anak perempuannya menangis hadirin. Maka baginda Rasulullah SAW justru memperkuat anaknya. Wahai anakku, kamu tidak perlu khawatir, karena sudah janji Allah. Allah sendiri yang telah memberitahukan kepada saya bahwa agama yang dibawa oleh ayahmu ini akan disampaikan sampai ke ujung-ujung dunia. Sampai rumah-rumah yang besar maupun rumah-rumah kayu akan disampaikan agama ayahmu. तो बुजुर्ग दोस्तों भाइयों, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उस दिनों में खाली कलमा नहीं पढ़ता था और कलमा पढ़ने के बाद में उसकी मेहनत में लग जाता था। हमने जब से कलमा पढ़ा है, हमारा कितना वक्त जी इन फिक्रों में लगता है अल्लाह का दीन पूरे आलम में फैल जाए। अरे घर में अगर तालीम भी करो तो फरमाया इस नियत से करो अल्लाह पूरे आलम में दीन फैला दे। अगर अपना गश्त करने भी जाओ उसमें भी ये नियत करो अल्लाह पूरा आलम में अपना दीन फैला दे। उस फिक्र के वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ये कलमा आपको मिला और आपको नबी बनाया गया, तो आप सबसे पहले अपने दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए
और उनको कहा कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बना दिया है, नबी बना दिया है। आप फौरन ईमान लाए, क्योंकि आपकी जिंदगी को वो जानते थे, आपकी सच्चाई को वो जानते थे। और सबसे पहले मर्दों में कलमा पढ़ने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो भी इसी फिक्र में लग गए कि ये कलमा पढ़कर और मेहनत करने के लिए गए और 5 आदमी को लाए। अगले दिन फिर 3 आदमी को लाए जो अशरा मुबश्शरा बने। Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang memiliki fikir sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima kalimah ini, begitu mendapat perintah ini, maka siang dan malam hadirin, seluruh hartanya dikorbankan untuk fikir ini. Bagaimana agama bisa sampai ke ujung-ujung dunia.